जय जगन्नाथ विद्यासा क्लास आपण मानकु स्वागत करुच्ची आज सिटी बा डीएलईडी क्लास को आज क्लास रे मु आलोचना करी सेक्शन 1 रे थिबा लैंग्वेज बा इंग्लिश विषयटी को पिला माने तुमर ओडिया रे जेमति देई देछि जे को पार्ट को बा ग्रामर को अंश गुडी को तुमे देखिबो किंतु इंग्रजी रे सेमिति देई नहीं तेबे पूर्वरु पडुथिबा प्रश्न को आधारित करी आज मु केतोटी प्रश्न नै आछि एई लैंग्वेज बा इंग्लिश रो समुदाय 10 मार्क प्रश्न आसी थाई तेबे केमिति क्वेश्चन पड़ी थाए बा केमिति प्रश्न आसी थाए एथिरे ना गोटे पैसेज आसी थाए एवं ए पैसेज रिलेटेड 5टी प्रश्न दिया जाय थाए एवं अन्य 5टी प्रश्न ग्रामर रिलेटेड थाए तेबे कोन ग्रामर रिलेटेड अछि ताकू देखिबा हमें एक रे एंटोनिम्स बा सिनोनिम्स एंटोनिम कहले ऑपोजिट सिनोनिम कहले समान अर्थबोधक तेणु सेकेंड आसूची सिंगल वर्ड्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक पदरे प्रकाश कर नेक्स्ट आसूची नाउन अर्थात विशेष्य तापरे प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम एडजेक्टिव अर्थात विशेषण एडवर्ब्स अर्थात क्रिया विशेषण टेंसेस अर्थात आम काल नेक्स्ट प्रिपोजिशंस अर्थात आमर अव्यय फ्रेजाल प्रिपोजिशंस ये मध्य फ्रेजाल अव्यय एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स विथ सब्जेक्ट्स कर्ता और क्रियार संबंध इत्यादि विषय रे प्रश्न पचार जाय थाए ठीक अछि तेबे देखिबा आज हम गोटे प्रश्न आलोचना करा जाउछि पैसेज टी को हमें देखिबा पिला माने सिटी बा डीएलईडी एंट्रेंस रे जो सेक्शन 1 रे आसुथिबा हमर लैंग्वेज बा इंग्लिश प्रश्न गुडी को प्राय पिला माने टिके शेष रे अटेम्प्ट करिया पे चेष्टा करथन काहे कि ना ताका मन रे भय थाए जे हमें ये जो इंग्लिश टी को पढ़ी पारे बड़ पैसेज टी देई थे तो से पैसेज देखिकी पिला माने डरी जाती जे समय हेबो कि नहीं मु ताको पारिबी कि नहीं एवं से आंसर गुडी को ठीक देई पारिबी कि नहीं तेणु बहुत पिला कौन करती ना न पढ़ी कि छाड़ी देती किछि पढ़ंती प्रश्न भीतर को जाती छाड़ी दियंती किंतु पढ़िले आम जानिबा जे से प्रश्न गुडी को केते सहज एवं ता भीतर काढिबा मध्ये केते सहज तेणु ये पैसेज रिलेटेड प्रश्न को देखी पिला माने डरबानी आमे कौन करिबा ना प्रथमे से जो पैसेज रिलेटेड प्रथम 5टी प्रश्न देउछि 5टी बा 4टी प्रश्न देउछि से गुडी को आमे भलो भाबरे पढ़ी नेबा टिके आखि पकई नेबा को परीक्षा प्रश्न गुडी को जो आसीछि पैसेज भीतरु तापरे आमे पैसेज भीतर को जिबा पढ़िबा तापरे पैसेज टी को पढ़िबा पैसेज टी पढ़ी सला परे नेक्स्ट आउथरे क्वेश्चन को जिबा बुझीला प्रथमे प्रश्न गुडी को आमे टिके नजर पकेबा तापरे पैसेज टी पढ़िबा पैसेज पढ़ी साला परे पुनः 1 नंबर प्रश्न को जिबा वर्तमान पढ़िबा पैसेज When Mr. Jones went to a restaurant one day, he left his coat near the door. There was nothing in the pockets of the coat when he left it. So he was very surprised when he took his coat after his meal and found the pockets full of jewelry. There was a waiter near the door. Mr. Jones said to him, "Somebody has made a mistake. He has put some jewelry in my coat. Take it, and when he comes back, give it to him." The waiter took it and went away. Suddenly another man came in with a coat just like Mr. Jones. "I am sorry," said this man. "I made a mistake. I took your coat and you have got mine. Please give me my coat and the jewelry." Mr. Johnson said, "I gave the jewelry to the waiter. He will give it to you." Mr. Jones called the manager of the restaurant, but the manager said, "We have no waiters here. We have only waitresses." "You gave the jewelry to a thief," the other man shouted. "I shall send for the police." Mr. Jones was frightened and paid the man a lot of money for the jewelry. So this is all about the passage. पिला माने पैसेज टी पढ़ी सारा परे वर्तमान आम 1 नंबर प्रश्न को जीवा कौन दिया जायछि प्रश्न नंबर 1 Whom did Mr. Jones give the jewelry? कहा को दे देले टू ए वेटर टू ए वेट्रेस टू ए thief और टू द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट एठी पिला देखो एठी लिखा है जो ए लाइन टी देखो यू गेव द ज्वेलरी टू ए thief एठी अछि देखो टू ए thief तले आंसर कोन हला टू ए thief नेक्स्ट आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 Who was the real owner of the jewelry? Who was the real owner of the jewelry? Mr. Jones,
the waitress, the manager or the other man? एटी देख पिला पैसेज रे लाइन टी को देख. Suddenly another man came in with a coat just like Mr. Jones. I am sorry, said this man. I made a mistake. So here other man. So real owner of the jewelry is the other man. Third question. Mr. Jones was surprised when he found that. कौन पे Mr. Jones surprised हो गए? There was nothing in the pockets of his coat. There was jewelry in the pockets of his coat. Somebody had taken away his coat. Somebody had stolen his jewelry. पढ़ी सारे बर्तमान जीवा आम पैसेज को. When Mr. Jones went to a restaurant one day, he left his coat near the door. रखी देथिले. There was nothing in the pocket of the coat when he left it, so he was very surprised when he took his coat after his meal and found the pockets full of jewelry. So answer is option number B. Next question. You gave the jewelry to a thief. The word you here mean Mr. John, the waiter, the waitress or the other man? ए लाइन टी को देखो पिला. But the manager said, we have no waitress here. ता पूर्वर टी देखिबा. Mr. Jones called the manager of the restaurant, but the manager said, we have no waiters here. We have only waitresses. You gave the jewelry to a thief. The other man shouted. So here you means Mr. John. So answer is option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन पिला देखो ये चारोटी ये पैसेज टी चारोटी प्रश्न देछि. नेक्स्ट ग्रामर रिलेटेड कौन देछि देखिबा. The words given in the questions 5, 6, 7 are similar in meaning with certain words in the passage. Synonym पचला जोटा कि पैसेज रिलेटेड अछि. Choose the right word from the choices for your answer against each question. Astonished एठी देखछि astonished. एस्टोनिस्ट गोटे सिमिलर वर्ड यूज होती तुम कौटी पैसेज रे खोजी बाहर करवा. देखा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए साउटेड, ऑप्शन नंबर बी फ्राइटेंड, ऑप्शन नंबर सी सरप्राइज्ड. नन ऑफ दिस. तेणु ये जो देछि पिला ए बी सी भितर आम देखिले कौटी वर्ड अच्छी लाइन लाइन सरप्राइज्ड. सो द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिस्ट इज सरप्राइज्ड. ऑप्शन नंबर सी. Next 6 number became afraid. Became afraid. Option number A frightened. Option number B left. Option number C went away. So frightened, where is the word used here? Frightened. खोजिबा हमें frightened. Surprised तो हमें पाइथिले एठी. Frightened कोठी अछि देखिबा. से लाइन रे हमें टिके चल जिबा. लास्ट लाइन को देखो अच्छी. मिस्टर जॉन वॉज फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स बिकेम अफ्रेड. ओके. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 7 नंबर स्पोक लाउडली. ऑप्शन नंबर ए कॉल्ड, बी साउटेड, सी आंसर्ड. तीनटा वर्ड को हमें देखा कौटी अच्छी. द अदर मैन साउटेड. लुक एट हियर. ये अच्छी देखो. ये देखो. The other man shouted. Shouted means spoke loudly. जोर कहवा. So answer is option number B. Next 8 number देखिबा. The phrase comes back means देखिबा हमें option 1 comes backward, returns to wrong place, returns to a place again or back return. आमे तो जानछु come back माने पुणी थरे आसीबा. तेणु option number C answer returns to a place again. 9 नंबर सडनली इज यूज्ड एज डेज. किपर यूज होती ये देख पिला अच्छी ये देख शब्दटी अच्छी सडनली. तेणु ये केमती यूज होती. एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव ऑल दिस अबव. एटा एडवर्ब. पिला माने ये मन रखा आम एलवाई बसते साधारणतः से एडवर्ब रे जाए. ठीक अच्छे. क्रिया विशेषण. 10 नंबर the adverb form of mistake is mistakeful, mistaken, mistook and none of these. mistake रोची mistaken. mistake रो mistaken.
ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏଡ଼ଭାର୍ବ ପଚାରିଛି, କେଉଁଠି ନାଉନ୍ ପଚାରିଥାଏ, କେଉଁଠି ପୁଣି ଏଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ପଚାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଏଡ଼ଭାର୍ବ, ଏଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ନାଉନ୍ ଯେଉଁ ତା'ର ଗଠନ ରୂପଟି ବା କିପରି ହେଉଛି ତା'ର ବି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ଅଛି। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।